Okay, hello everyone. Could you please confirm that yes, my audio and video is fine to all of you? I hope there is no technical issue that is there. Yes, thank you, Gaurav. Thank you. And with this, good evening, everyone, first of all, and welcome to this Finance Current Affairs session. My name is Davinder, and I'm your finance mentor. In this session, we are going to discuss some again important news which can be asked in your phase one. Okay, phase one में पूछी जा सकती है, and in your phase two as well for the regulatory body examination of RBI. Right? तो हम धीरे धीरे डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं. Right? So we are going to cover these three news with us that you can see in front of your screen, which is RBI setup Q safe, right? This is one, we can say, news that we have to discuss. You all have heard this, and if you have visited the RBI website, तो आपको पता होगा कि एक नई न्यूज आई है. Then we have a cooling off period for the directors in the cooperative banks. We will discuss that also. And apart from this, there was a 623rd meeting of the central board. और उसमें उन्होंने कुछ अप्रूव किया है that the surplus that will be shared with the government. ठीक है, तो वो surplus कितना है, कुछ data points है हमारे पास important which can be asked in the examination, वो हम discuss करेंगे. And at last we have some questions to be discussed. I want you all to be participative in the question session. राइट तो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं विच इज आरबीआई सेटअप क्यू सेफ. क्यू सेफ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो क्यू सेफ का फुल फॉर्म इज दिस विच इज क्वांटम सिक्योर एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम. ठीक है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम फॉर्म करना चाह रहे हैं, राइट? कौन? आरबीआई. दैट इज फॉर द क्वांटम सिक्योर. ठीक है, क्वांटम से बचने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी से बचने के लिए दे हैव क्रिएटिंग दिस वी कैन सी इकोसिस्टम. और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाएगी, राइट? एंड बिकॉज दिस इज अ न्यू इकोसिस्टम, सो इसके लिए दे हैव सेट वन एक्सपर्ट कमेटी. वो एक्सपर्ट कमेटी एक सेटअप की गई है बाय द आरबीआई सो दैट दे कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड सजेस्ट अस that what exactly is the harming and the benefit point of the quantum technology. ठीक है, तो quantum technology है क्या? So the quantum technology is the advanced technology, or we can say some rules of the quantum physics which are building extreme powerful computers. ये कुछ ऐसे powerful computers हैं जो banks के data points को या फिर data passwords को हैक कर सकते हैं वेरी इजीली. दे कैन इजीली क्रैक दीज कोड्स जो बैंक्स के पास हैं करंटली. ठीक है, बैंक्स अभी जनरली क्या करते हैं, दे हैव सम पासवर्ड्स, दे हैव सम एनालॉगी. ठीक है, जिसके बेसिस पे वो काम करते हैं. उनके पास कुछ एल्गोरिदम है जिसके बेसिस पे वो अपने बैंकिंग डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, सिक्योर रखते हैं एंड स्टोर करते हैं. नाउ बिकॉज दीज न्यू कंप्यूटर्स आर गोइंग टू बी बिल्ड, दे कैन hamper the banking data and the password as well. कुछ confidential data reveal हो सकते हैं which is not safer for the banks, and hence these computers have the ability to solve the problems much faster than the
normal computers. And because of their ability, we are checking कि ये जो quantum technology है, is our banking system is ready for such technology? क्या ये हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगा या फिर कुछ आसान भी रहेगा? दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी स्टडीड बाय द एक्सपर्ट कमेटी. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या किया हुआ है कि आरबीआई का कंसर्न क्या है. आरबीआई का ये कंसर्न है कि अभी इस तरीके से जिस तरीके से बैंक्स और पेमेंट सिस्टम्स में इंक्रिप्शन की जाती है या फिर क्रिप्टोग्राफी की जाती है, तो कीप द डाटा सेफ. इन दोनों का क्या मतलब है? दैट दे आर कीपिंग सम layers of password. They have some way to encrypt the data points. All such things are some of the ways that how the banks and payment system are currently storing the data points, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रिप्टोग्राफी कह रहे हैं. ठीक है, तो फ्यूचर में these quantum technology और computers may become much more powerful as compared to our current ecosystem. So they may crack the encrypted method, they may break the digital security very easily, and they can also expose the financial data. So RBI चाहता है कि that India's financial system to become a quantum safe, that they want to ensure that our technology, our banking system, our financial system is quantum safe. ठीक है, तो क्वांटम सेफ के बारे में पढ़ते हैं. बिकॉज द क्वांटम सेफ स्टैंड्स फॉर क्वांटम सिक्योर एडेप्टिव financial ecosystem. This financial system that remains secure even in the age of quantum computers. They can adapt the future quantum technology very easily. उनको ज़्यादा trouble ना हो, difficulties ना हो. And to protect banking and payment infrastructure from the quantum threats or heat. उससे बचने के लिए they are making sure that our banking system is ready enough. अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है फॉर बिल्डिंग दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है, इट इज बीइंग करंटली वी कैन से हेडेड बाय अनिल प्रभाकर, डॉक्टर अनिल प्रभाकर, प्रोफेसर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास. तो आप इनके बारे में जरूर याद रखेंगे दैट हु इज द वन हु इज हेडिंग द कमेटी फॉर द क्यू सेफ, राइट. और इसके साथ साथ द कमेटी विल बी ऑल्सो सपोर्टेड बाय द फिनटेक डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई. फिनटेक डिपार्टमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट द expert committee for any kind of support that they need. Apart from this, what are the purpose? To be very specific, expert committee क्या करेंगी? तो first of all, they are going to evaluate the potential benefits and risk challenges in the financial sector. अभी जो हमारे पास जितने भी रिस्क हैं, benefits हैं, उनका हम SWOT analysis करेंगे to see that what opportunities do we have, what are the risks and what are the threats. उसके बाद they are going to evaluate the cryptographic inventory. ठीक है, यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा लिस्ट होगी विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू दीज एक्सपर्ट कमेटी, वेयरइन दे विल टेल दैट हाउ द डेटा पॉइंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड और इनक्रिप्टेड, और कहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं एंड हाउ दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड करंटली. ठीक है, तो हमारी अभी जो हमारा करंट सिस्टम है उसे हम रिव्यू करेंगे. आफ्टर दैट वी विल असेस द क्रिप्टो एजिलिटी कि हमारे पास क्या स्कोप है. इज इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस to switch from current system to the quantum technology system, or is it easy for us to deviate from current technological system to the quantum technology. तो इन चीजों को हम समझने के लिए we are going to have a crypto agility. इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखेंगे दैट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग इन ऑर्डर टू डील विद दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी. वी विल सी दैट वेदर आवर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर्ड इनफ टू डील विद सच चेंज in technology. अगर नहीं है तो we will suggest some points to be taken into consideration. After that, we will recommend some roadmap, a framework, a timeliness to adopt this framework, and then implementation strategy will be adopted by the banking system. तो ये सब चीजें will be we can say promoted or we can say implemented by the expert committee. तो ये थी हमारी first news. Now we are going to discuss the second news. This is also very easy. It says cooling off period for the directors of cooperative banks. यहाँ पर जब हम cooperative banks की बात करें, we are talking about urban cooperative banks and we are also talking about rural cooperative banks, जिसमें आपके central cooperative banks और state level cooperative banks भी include होते हैं. So आपको इसकी applicability अच्छे से याद रखनी है that what this rule is applicable on. So basically it is applicable on cooperative banks. So cooling off period. What is the cooling off period? So cooling off period is a period
or we can say a break period which is being allowed for the directors. डायरेक्टर्स को ये ब्रेक पीरियड लेना ही लेना है एंड दैट व्हाट दे हैव इंट्रोड्यूस कि एक ब्रेक पीरियड होना चाहिए इन देयर सर्विस. जब भी वो एक बैंक को सर्विस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टर्स की भी एक तरह की जॉब होती है जिसमें वो बैंक को हैंडल करते हैं, राइट. तो कुछ सर्टेन पीरियड तक दे कैन हैंडल इट, राइट, विच इज बिंग सेड एज 10 years. 10 years तक maximum they can be a director of one single bank at a point of time to the maximum period. ठीक है, इसके बाद if they have to continue with the same bank they have to take a break of 3 years, जिसे हम क्या कह रहे हैं, cooling off period कह रहे हैं यहाँ पर. that is 3 years की break लेनी बहुत जरूरी है. otherwise we will assume that they have taken the service in continuation. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम प्रॉब्लम क्या है कंटिन्यूएशन में. इट इज गुड इफ द डायरेक्टर इज कंटिन्यू टू वर्क इन अ सिंगल बैंक फॉर 20 years, राइट, स्ट्रेट 20 years. सो आई वुड से नो. जब एक डायरेक्टर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टेज इन अ बैंक, देयर इज सम चांसेस कि वो कुछ अच्छे से लिंक बना ले या फिर उनके कुछ हैबिचुअल पॉइंट्स बन जाए जहां पर दे आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स और फ्यू डिसीजन मेकिंग. तो ये जो बायसनेस है दैट मे डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बिकॉज यू मीट पीपल ऑन अ डेली बेसिस, यू माइट फेवर देम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस ब्रेकिंग ऑफ पीरियड विल इंश्योर दैट yes, you are not continuing for a longer period of time and you have some break so that we can stop you for certain period of time, and throughout that break period some another director comes and work for your bank to ensure the independency in the decision making, राइट. जो भी इंडिपेंडेंसी है या फिर जो बायसनेस है उसे रिमूव किया जाए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर बिल्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. डायरेक्टर का अपना कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, बैंक का अपना कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, so that builds a conflict of interest, and that is the reason a maximum tenure period is being set for the director to serve a particular bank, and after that they have mandatorily have to take a 3 years of break period. Now, as I told you that these final amendments, these are finalized. तो आपको ये याद रखनी है. This can be asked. So these final amendments are being, we can say, amending the two directions of urban cooperative banks and the rural cooperative banks. And this law fixes the maximum limit how long a director going to continue with the same bank board. ठीक है. तो earlier क्या होता था, पहले the director could remain continuously on the board for the maximum of 8 years. तो पहले 8 years का timeline होता था to stay in the bank. But after that क्या problem आने लगी with that rule that they take a very shorter period of time का break लेते थे, say of 2 months or 1 month, and then they still continue with the banking system, और फिर से continue करने लग जाते थे with the banking system. अब ये जो break होता था, this was of 1 month, 2 months or maybe 1 year to the max, right? So this cooling off period was not enough, right? क्योंकि इस break को they were considering it as a technical requirement कि मुझे कुछ दिनों के लिए absent रहना है from the bank, right? I have to leave the company for very shorter period of time. I have to leave the bank for a very shorter period of time so that I can ensure the independency. और वो shorter period of time के बाद दोबारा reappoint हो जाते थे with the same bank, and that was creating a problem, right? तो यहाँ पर they increased the timeline for 10 years. They increased the timeline for 10 years. ये 10 years की timeline तो बहुत पहले ही increase हो गई थी through Banking Law Amendment 2025, that they increased the timeline for 8 years from 8 years to 10 years. But even after this problem was remaining, that they were taking the break for a shorter period of time and they were then quickly getting re-elected in the same bank. And after this, they came out with a new rule. The new rule was that yes, they can complete the 10 year of continuous years, but the condition is that after 10 years, they are going to take a minimum break of 3 years. So minimum, they can take a break of 3 years or it can maximize it, right? So after 3 years, they can again become a director through election, co-option or any other method, right? But 3-year break is required here. Now there are two cases that may come after this break, right? Suppose there is a 3 years of break. Now the situation might be that you haven't served the entire 3 years. So your period is less than 3 years. Your break is less than 3 years. The other option is that you have served more than 3 years, right?
So RBI says if you have served less than 3 years, I am going to consider that you continued with the same timeline. मान लीजिए आपने 10 साल के लिए काम किया, you take a break of 2 years and then you again continue with your service, right? So they are saying it is less than 3 years, so I will consider. यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 साल के लिए काम किए, फिर आपने 2 years का ब्रेक लिया, then after that you worked for 8 years. I am going to consider it as if you have spent 20 years in that cooperative bank, right? तो वो कहेंगे कि ये कंटिन्यूस में ही आपने सर्विस करी है, right? Such short break is not going to be considered as a break anymore. If the break is more than 3 years, the old tenure will not be counted. तो old tenure जो है आपका, यानी कि ये जो 10 साल का ईयर है, that will not be counted and we are going to count it from here कि अभी आपको 8 years हुए हैं या फिर 9 years हुए हैं, right? So this was all about your cooling off period for the directors of cooperative banks. I hope ये clear होगा आपको. And now we are going to continue with our next news, right? कोई doubts तो नहीं है आपको? एक बार रिविजिट करते हैं आपकी लाइव चैट. यस, ठीक है. गुड इवनिंग अनवी, गुड इवनिंग आदित्य, वेलकम टू सेशन. तो अभी हम थर्ड न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अब हुआ क्या है दैट देयर वाज अ 623rd मीटिंग ऑफ द आरबीआई, of the central board of the RBI. They decided few of the major things in this board meeting. So this meeting was held by the RBI governor, that was Shri Sanjay Malhotra sir, right? What they discussed? They discussed the current global and domestic economic situation. They also looked at the economic outlook and they also finalized the RBI annual accounts. तो इसके बाद से अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा तो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट सून. तो इसके बाद से हमें एनुअल रिपोर्ट भी मिल सकती है आरबीआई की, राइट? बट हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइट किए हुए हैं इन द बोर्ड मीटिंग, तो दैट विल बी डिस्कस इन दैट. So first of all, they discuss few of the things that our gross income, whose gross income, the RBI's gross income has been increased by 26.42%. पिछली बारी अगर जितना भी था उनका प्रॉफिट, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हाइपोथेटिकल लेते हैं, 100 करोड़ उनका प्रॉफिट था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज बाय 126.42%. ठीक है, तो 26.42% is the growth in their gross income. उनके एक्सपेंडिचर बिफोर द रिस्क प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय 27.60%. तो उनका एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अलॉन्ग विद द ग्रॉस इनकम. उनके नेट इनकम कितनी पहुंच गई है? इट हैज रीच टू 3,95,972.10 करोड़. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है दैट व्हाट इज देयर नेट इनकम इज. नेट इनकम पूछी जा सकती है फ्रॉम यू इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो यू विल रिमेंबर दिस एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच वॉज 3,13,455.77 crore in financial year 25, right? So we get to know that their net income has also increased. बैलेंस शीट का जो साइज है that has also expanded by 20.61% to 91,97,121.08 करोड़. तो यहाँ पर बैलेंस शीट का साइज आपसे पूछा जा सकता है. यू विल रिमेंबर द बैलेंस शीट का साइज ऑफ द आरबीआई. ठीक है, यानी कि उनके टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, दैट व्हाट टेल्स अस द साइज ऑफ द बैलेंस शीट. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो नेट इनकम, बैलेंस शीट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने साथ कोई डायरी लेके बैठे हैं, आपके पास अपना वो है, क्या कहते हैं, डेटा बैंक है, देन राइट दीज थिंग्स इन दैट. ठीक है, हाईलाइट्स के रूप में आप लिख सकते हैं. देन हियर वी आर विद द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क हमें बताता है दैट हाउ मच मनी द आरबीआई नीड टू कीप with itself and how much it can share with the government of India. ठीक है, अब आरबीआई अपने पास पैसा क्यों रखता है? They can keep the money for the contingent risk buffer. That is, considering the emergency situation, the uncertain situation of future, they can keep certain money with themselves, right? So for that they keep certain buffer with themselves. ठीक है, तो contingency risk buffer can be range from 4.5 to 7.5%. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये आपको वैसे ही रेंज बता रहे हैं कि सीआरबी की रेंज कहां तक रेंज हो सकती है, बिटवीन 4.5 टू 7.5% ऑफ द बैलेंस शीट साइज. बैलेंस शीट का आपका जितना भी साइज है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कीप 4 to
4.5 to 7.5 percentage of the CRB. But right now, how much bank have maintained? बैंक ने अभी RBI ने अभी कितना maintain किया है? That is 6.5 percentage. So this can be asked in the examination. कि what is the current CRB which is being maintained by the RBI? So that is 6.5 percentage of the RBI's balance sheet. ठीक है? Then comes RBI transferred 1,09,379.64 करोड़ टुवर्ड्स द CRB. अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात किया जाए कि एक्चुअल में उन्होंने कितना बफर रखा है अपने आरबीआई के पास, अपने पास, ठीक है, तो दैट इज वे मच मोर हायर देन द प्रीवियस ईयर इन्होंने 44,000 करोड़ रखा था, इस बारी 1 लाख करोड़ समथिंग रखा है. सो ह्यूज अमाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड टुवर्ड्स द सीआरबी. तो आपको ये याद रखना है that CRB may they have right now have kept a lot of money for themselves, right, before they give the profit sharing to the government. इसके अलावा what else they have discussed, ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए. अब इसके बाद ये कह रहे हैं द सेंट्रल बैंक विच इज द आरबीआई approves the transfer of a record surplus of 2,86,588.46 crore to the central government in the accounting period financial year 26. तो financial year 26 में how much money they have kept? They have kept 2.8 lakh rupees, approximately 2.8 lakh crore rupees transferred to the गवर्नमेंट. तो ये आपको जरूर याद रखना है दैट हाउ मच सरप्लस दे हैव शेयर्ड विद द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट को अगर डिविडेंड शेयर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलेगा इन रिड्यूसिंग देयर डेफिसिट और टू मैनेज देयर फाइनेंसेस इन अ बेटर वे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एक बैकग्राउंड लेके चलते हैं हम ईसीएफ का, दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इज अ पॉलिसी दैट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजन सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन बाय द आरबीआई. कितना प्रोविजन उन्हें अपने पास मेंटेन करना चाहिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू द गवर्नमेंट, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द ईसीएफ फ्रेमवर्क. ठीक है, दिस वाज सजेस्टेड बाय द बिमल जलन कमेटी इन 2019. इसका बैकग्राउंड जरूर याद करके रखेंगे, सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द ईसीएफ. So this was recommended by Bimal Jalan committee that the excess money need to be transferred to the government, right, after keeping some adequate amount of capital with the RBI. The RBI surplus transfer is one of the important source of non-tax revenue for the government to support the fiscal management. Obviously, whenever the RBI is giving certain money, certain portion of their own profit to the government is going to get supported with that money. Their deficit will reduce और उनकी जो non-tax income है that will increase, right? So these are some important points from the 623rd Central Board meeting of the RBI. ठीक है, I hope आपको points अच्छे से याद रहे होंगे. Okay, so let's just move ahead with the question session. I hope it is clear to all of you. Question की बात करते हैं. So the first question says that the RBI announced a constitution of expert committee for Q-Safe. The initiative reflects the growing concern regarding the impact of quantum technology on the financial sector. Which of the following statements are correct here? So 1, 2, 3, 4 options are being given and select the right code from the options. So let's see how many of you can answer it correctly. Yes. Which one is the correct answer? Yes. A is a right option. A is a right option. That is 1, 2, and 3. That is true. Why? What is wrong with the fourth statement? It is say that the committee is being chaired by the governor of the RBI. No, that is not true. It is being chaired by Dr. Anil sir. Right? Let's just move ahead with next question, which is under the amended provision applicable to the urban cooperative banks. A director who completes 10 continuous year on the board of the same UCB dash. ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा? So among these 5 options, what is the correct option for question number 2?
for question number 2. Correct. And we have correctly answered it. That is second ka C along with Gaurav. Good job, Anvi and Gaurav. So, right, third is the correct answer, which is it must undergo the minimum 3-year cooling off period before joining the same UCB board. ठीक है, उन्हें 3 years का cooling off period करना पड़ेगा before joining the UCB board once again. Here we are with some data points which are very important. The RBI transferred a record surplus of dash to the central government. Now, what is that record surplus? Which one is the correct answer here? Let's see the options. Good. Good Anvi, good Parveen, good Gaurav. Good job. So yes, B is the right answer. That is 2,86,588 rupees. Right? Good. Good Aditya. Good job. Question number 4. Under the revised economic framework, the contingent buffer, risk buffer, can be maintained between a range of dash to dash of the RBI's balance sheet size. So, what is the right answer? Great. B is the right answer. That is 4.5 to 7.5. 4.5 to 7.5 is the right and correct range. Good job. Then comes question number 5. It says the committee that recommended the revised economic capital framework in 2019 was headed by dash. So tell me, what is the right answer in this case? Yes, great. Bimal Jalan is the right answer. Uh, After him, after the head, the committee's name was named as Bimal Jalan Committee. So Bimal Jalan is the right answer, right? So great, everyone. C is the correct answer. So this is my Telegram group. If you want to join, if you want any kind of guidance, you can ask me here. Apart from this, we are offering a regulatory body exam super pack at a very lowest price, which is 6,499 rupees only. You can access this at this particular point of we can say price by applying the code DAVI, which is being written in my screen also, right? If you are looking for the crash course, अगर आपको crash course चाहिए तो उसके लिए भी we have that course wherein all the things are available at one single point of time along with the mentorship of OP sir, ex CGM sir. Again, अगर आपको इसके ऊपर पे discount चाहिए, you can get that with that code which is being written on the screen. ठीक है? So I hope you have no doubt from the class. If you have any, you can tell me in the comment section, and I will ensure that the PDF is being available to all of you after this class. Okay. Goodbye, everyone. Take care of yourself and God bless you.